जूम के इस जुड़े हुए समस्त विद्वजन एवं विदुषियों का स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम मैं आज की संगोष्ठी के प्रथम डॉक्टर प्रबल प्रताप जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपकी वैज्ञानिक दृष्टि साइबर सुरक्षा के निमित्त जागरूकता शिक्षक वेबिनार में की तरह ही प्रबल प्रभाव डाली मेरा मानना है। नहीं आ रही है, सभी लोग अपना माइक म्यूट कर लें प्लीज। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जिनका माइक जो ऑन है, इसलिए इको कर रही है। हेलो, आप लोग प्लीज अपना मोबाइल यूज करें। सर्वप्रथम मैं आज की संगोष्ठी के प्रथम वक्ता डॉक्टर प्रबल प्रताप जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपकी वैज्ञानिक दृष्टि साइबर सुरक्षा के निमित्त जागरूकता शीर्षक वेबिनार के आप प्रबल प्रकाश डालेंगे, ऐसा मेरा मानना है। संगोष्ठी के प्रमुख वक्ता डॉक्टर रजनीकांत वर्मा जी का मैं समस्त नवयुक्त परिवार की तरफ से अभिवादन करती हूँ। आपकी विषय विशेषज्ञता का लाभ प्राप्त कर हम समृद्ध होंगे, ऐसी मेरी आशा है। आज की संगोष्ठी के विशिष्ट वक्ता डॉक्टर मनोज पांडे जी का मैं स्वागत एवं वंदन करती हूँ। आप न्याय कानूनविद हैं और आपको आपकी न्याय बुद्धि से निर्मित दृष्टि साइबर से जुड़े कानून और उनसे बचने के उपाय पर विशेष प्रकाश डालेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इस वेबिनार को अंतिम रूप देने वाली दक्ष व्यवस्थापिका और सहजीविता के मर्म को समझने वाली महाविद्यालय परिवार की मुखिया प्रोफेसर डॉक्टर मंजुला उपाध्याय जी का मैं तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। सजग, सचेत और समदर्शी विदुषी की बहुमूल्य दृष्टि से हम सब आपके द्वारा प्रस्तुत ज्ञान गंगा का लाभ लेंगे। संगोष्ठी का विषय साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस है। इसका हिंदी अनुवाद साइबर सुरक्षा और जागरूकता है। विषय समसामयिक साइबर त्रुटियों को सुरक्षा के नियमन से बांधकर अपराध होने से कैसे रोका जाए और जागरूकता के लिए आवश्यक कदमों की ओर संकेत करता है। हमारे सम्मानित विद्वानों द्वारा इस ज्ञान यात्रा को नई मंजिल प्राप्त होगी और हमें जागरूकता का मंच प्राप्त होगा। पुनश्च मैं सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। इसी क्रम में मैं श्रीमती चंदन मौर्य को बुलाती हूँ जो आए और डॉक्टर प्रबल प्रताप का परिचय प्रदान करें। Thank you, Manjula ma'am. Thank you, Manjula ma'am. Good afternoon to one and all. It's an honor for me to introduce such an eminent personality, Dr. Prabal Pratap sir. First of all, a very warm welcome to our guest speaker, Dr. Prabal Pratap sir. He is working as scientist and deputy director in DRDO, Ministry of Defense. He has 14 years of experience in area of research and academic. He has served as expert member in various institutes and universities. His many research papers have been published in conferences and journals. He has written book chapters also. He has been nominated as member of advisory committee organizations like ITBP, CRPF Academy, BSF, IIT BHU, NPTI, Delhi Jal Board, NITTTR, etc. He has been awarded as DRDO Scientist of the Year. Now, I would like to invite Dr. Prabal Pratap sir
to deliver talk on cybersecurity and to enlighten us with knowledge. Please, sir. Thank you, ma'am, for giving me this opportunity to deliver talk in this such esteemed college. So I'm just sharing my PPT. Just tell whether it's. Am I audible and visible? My PPT is visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. And what about my PPT? Is it visible? Yes, sir. It is visible. Okay. Okay. Thank you for giving me opportunity to deliver talk on this cyber security awareness topic in such a esteemed college. It's my privilege to deliver talk on this topic. So just starting with this cyber security awareness. First thing I would like to tell what about the cyber security? Cyber security is nowadays cyber security is become a very wide area. It's about the security of information, security about your hardware, security about your electronic data, and so many things. So and nowadays this field is becoming very increasingly very significant because most of the things is reliable on computer system and internet and on obviously wireless network. So all these things, security of all these things, infrastructure, data, networks. So it's all depend upon this, comes under the cyber security. So starting with my first PPT. Okay. So we will discuss what is the why there is a need for cybersecurity, what are the threats, what are the stay secure, personal privacy, QR codes, supports and resources. These are my presentation outlines. First discuss why is the cyber awareness important for all of us. Why now this cyber security is not only the topic for engineering background persons or computer science background persons. This cyber security domain is necessary for every person, whether it's industry person, whether it is student or all of a businessman. So this cyber security is very awareness. So we should know they should be aware about cyber security awareness. Any problem? Are you getting my voice? Hello? Yes, sir. Yes, sir. You are audible. Okay. So why cyber awareness is important? Because cyber awareness is important because cyber crime is growing trend. So awareness, when any crimes is going to increase, then its awareness comes in picture. So this is also the reason of awareness of cyber awareness, because this cyber crime is growing trend. Raise awareness of threats. As of most crimes, like police can't tackle this problem alone. See this, so we can't only reliable on cyber police or government authorities. We have to also aware of what are the cyber threats, how we can prevent. So we can't we can't only rely on police or government authorities to tackle this problem. To encourage reporting, promote government-backed schemes like Cyber Essentials. Cybercrime is massively underreported. So these are the things we should know, where we have to crime, what type of incident we have to avoid, and if anything happens, where we have to approach police
and what are the procedures. How we will discuss in last few years how this cybercrime affects in India. Approximately 12.5% of Indian economy is now online, which is a big, one of the big data. As we know, since last 2 years, as this COVID increases, most of the things we prefer online payment, we prefer online payment, we prefer online studies, online medical, our history, medical data, this even the government also using e-Sanjeevani. So most of the things we are dependent upon this, digital, and 12.5% of Indian economy is now online, which is a big thing. It poses a risk if correct security measures are not taken. In 2016, 49% of business are abused. It is not a matter only, but it's a very big thing. We have to think over it. Or 12.5 of incidents of cyber attack were reported in India in last year. According to an Office of Indian Computer Emergency Response Team, it's comes under the Ministry of Communication and IT. So there are almost 6 million of cybercrime and fraud offenses in 2021, which means these crimes type now make a half of all crime in India. So this thing, this is a big thing. We have to think over it. Now, who are the person who are doing this cybercrime? Who is doing the hacking? It may be it may be financial, theft, fraud, blackmailing. Well, later on we discuss a few examples how daily we are facing this this financial, political, state level, military, fame, fine status, hackers, pen testers, police, insiders, business. These are the main area where hacking can be done by hackers. Sorry sir for interruption. आपकी slides नहीं change हो रही है. हमें first slide ही दिख रही. Slide नहीं change हो रही मैम? No sir. But मैं तो slide change कर रहा हूँ. सर यहाँ पे तो हमें first page ही दिख रहा है. हमारा audio भी. सर साइड में क्लिक करिए, फिर वो स्लाइड हमें तब दिखे. स्लाइड शो तो नहीं चल रहा है, इसलिए आप स्लाइड पे क्लिक करिए तब हमें दिखेगा. अब आया मैम? स्लाइड पे मैं क्लिक कर रहा हूँ. सर नहीं, हमें फर्स्ट, अभी तो फर्स्ट पेज ही दिख रहा है. सर एक बार जिस नंबर की स्लाइड है उस पे एक बार साइड वाली रो पे क्लिक करके एक बार देखिएगा. हाँ, अब आई हैकिंग आ गया. अब कॉमन थ्रेड्स. ओके जी सर. So just now we discuss what are the types of hacking. Common threats is the ransom. So normally loaded into a computer via some download attachment link from email or website. Almost daily, we all of us getting some link or any attachment in our email, any link of website. So these are the types of common threats, that is of ransom threats. That they will either lock the screen or encrypt your data. So once ransom is uploaded on the computer or your tablet, it is very difficult to remove without removing all the data. So these are the types of common threats of ransom. So Vancy attack in 2017, this is one of the biggest cyber attack occur. Is said to have 3 lakhs computers in 150 countries. So many major companies also affected. That is of Renault, Spanish telecoms, gas companies, German railways. Even in India, most of the times, State Bank servers, we are this LICs, and even government organizations also, defense organization also, they are also face this common type of threats, ransom threats. So as per this awareness sites,
as we know that we will get little bit idea about this ransom threats. So I'm taking the one example. Continuously, people are saying that they are getting message there from that your account has been logged or for KYC updation. So you have to click on this link. So try to avoid immediately on any type of link. You have to know or get understand that any state bank or any bank or any insurance company, they will not send you any message from mobile number. It will come from uh, some different link. So whether you directly don't click on any link. This is the one of the example. More than 1/3 of NHS trust in England and Wales were affected. Over 6,800 operations were cancelled. So they ransom money they don't want in international hackers. They don't want money in this rupees currency. They want money in Bitcoin. So they will ask you to send money in terms of Bitcoin. How to tackle ransom? You should take backup. Keep a backup copy of your data. Ensure it's not permanently connected to network. Always make sure that your backup should be taken and it should not be directly connected to the any network. Patch. Keep your software up to date. Time to time you update your software. Attachments, don't click on the link from email, SMS. This could easily be from the untrusted source and contain the malware like ransom. So this is the major things you should keep in mind to as a cyber awareness from ransom. It is an attempt to obtain the sensitive information by deception. See, ransom, phishing, these are the all different types of cyber attacks. So then phishing is for to obtain the get your sensitive information of your organization, your college, or any academic institute. What sensitive information related to examinations. So it is an attempt to obtain the sensitive information. They will be after your login credential, payment details. So these are all the sensitive information. To upload the malware to a computer, the email will normally impersonate a genuine company or person. So these are the things comes under the phishing. So how you tackle the problem of phishing? Don't click any link or any email unless you can guarantee who it's from. Use a trusted platform for contacting the company via mobile number, app, or website. Make an email as a spam and contact the organization. First, you should understand about the sender's domain, from where email is coming. As soon as you get the email, you first open it without clicking any link. You just open it from where it comes. You should know the sender domain. Then it's what are the subject. If you find any suspicious subject and content, then immediately don't click on. One important basic thing is in such type of mail, there is a grammatical mistake. So it has been observed by professional that there is some mistake in grammar. So they use some bad grammar. Some link also. So link also reveal that it's a suspicious URL. So these are the things you check from your email. When you find anything, you
Don't click any or don't open the attachment. So these things are the phishing. How to look out from when shopping on the internet. So this is the very basic things. We all are doing the shopping from Amazon websites and Flipkart. So many online portal we are using. So uh, ensure that whether you are using the correct website. When you are getting any website link, it make sure that it's HTTPS. Not generally fake website, they have only HTTP link, and this HTTPS as the S for secure. Secure means it's a secure connection to website. This should prevent a man in a middle attack. What it will do, it will encrypt your data, and receiver will able to decrypt it, but it will be a fraudulent website. They will still obtain your information. So one more thing here I have not mentioned in this PPT. Before opening the website of any banking or any shopping website, where any website where some financial transaction, related to any financial transaction. So first you say see basic things whether this website contains this HTTPS, and there is a web server also, web certificate also. Web certificate, one of the right side of when you open any website, it's mentioned in the right side of website. So that is the web certificate. You can open that web certificate before starting any financial transaction. Make sure that website, whatever you have opened, whatever you get from any link, make sure that that website is genuine. So I'm telling that how you should know about the website is genuine or not. So at the right side there is a web secure certificate. That certificate is a digital certificate as signed by root certifying authority of India or any some trusted authority. So Indian websites, our root certifying authority is root CA, that is in the Ministry of Communication and IT. So you can easily see that there is a trust change between root CA, root certifying authority to sub certifying authority. So this type of website web certificate is given in the website. So you can easily see. After finishing my lecture, you can see as an experiment where you can open the government website, State Bank website, or any LIC website. So at the right side, you can see that web certificate. So you may aware they will mention the key size, who is the signing authority, validity of certificate, that web certificate, validity of web certificate. If one more thing, when you open the web certificate, hackers also they can also implement the web certificate also in fake website. So in this condition, you can see the validity of that certificate. If validity of that certificate is beyond your current date, you clearly understand that that website is not genuine. So these are some very basic things you should keep in mind. So while using this financial transaction, so you can prevent it. Use of credit card, PayPal when conducting online transactions. So these are the very important thing while you are using for payment, you are using the credit card, PayPal, or some debit card. So this fake website, they will store your credit card number, CVV number, these things. So these are the very important thing before you start doing any payment. Just go through it. This is the another example. Online authentication procedures, you get the security update. So here this security information that is added in your account, it is suggested that you use some authentication method, two-factor authentication, security quotient. Generally, bank is two-factor authentication. You have to use your OTP and your password also. So generally, most of the things you use minimum two-factor authentication for doing any
for financial transaction on online. You use the security question also. You notice that bank generally have some security questions. What is your pet name? What is your school name? So these are the things. See this how you get the message from bank and other some. This our security team has tried to contact you regarding your online account. This login to via this link to reactivate banking account. So they are asking that you have to link on this. So try to avoid these things. Don't directly click on any link. Generally, bank I have observed here in this UP circle. Generally, bank and financial insurance company, they are sending message that your policy is going to expire very soon. So just to activate it, KYC, update KYC, immediate they will call you and they are saying that I have sent one message just to otherwise your account has been blocked or your policy has been cancelled. So you click on this link to just update your policy. So all these are the fake calls. So just listen and avoid them. Public Wi-Fi. Public Wi-Fi is also not trustworthy. They could share your information to other companies who operate in countries without any data protection. So it is recommended by the cyber professional that don't use your financial transactions or any banking or any even email also for in public Wi-Fi, whether in airport or in IRCTC, in hotels also. Try to avoid. So because they are not trustworthy, your information can be shared to other countries or other organization. So try to avoid. These are the things comes under the awareness. Generally, people think that we are getting the free internet. Immediately they are doing the transactions and email activities. You can visit website, you can use the public Wi-Fi, you can visit website or get information but don't use any website which is your needs credentials, your username, passwords and banking, such type of things. So try to avoid this. What to do and what not to do. Not use online banking. Use your own data. Don't conduct any purchase. Use virtual private network. If you have to use public Wi-Fi, there's you try use VPN. This is an example. Say how home buyers lost $67,000 US on email fraud. So many examples are there. An email also scam. So these are the international. Nowadays, after COVID, cyber professionals, they are more interested to steal your medical history and medical data. Just to, and they sell that data to medical insurance companies. So these things also very important. So try to avoid disclose your medical history, critical medical history in public domain. Email scammers took my home deposit. Hackers are targeting home buyers and getting away from thousands of pounds. So hackers, the hackers community, they are
searching every type of customers, the customers who are doing shopping, customer who are taking home loan, who are working in sensitive organization, who are working in academic activities, IITs and other universities also. Password advice. See, for cyber awareness, how you should keep your password, that is very important. So every participant should please note down password policy, how you should keep your password of your email, banking, and OTP. So these are the very important things. One more thing is social engineering attack. People generally they randomly met with you and discuss about your family, your address, your date of birth, and your age. General thing they ask, and they know that people use OTP, password, they're related to their spouse name, date of birth, home address, these things. So these are the social engineering attack. They make hit and trial, and after a few hit and trial, they can get your credentials. So try to avoid these things. Use only one password per account. If you have 2 email accounts or IRCTC account, so password should be different. 3 random word is advisable as per the Home Ministry guidelines and cybersecurity guidelines. So the password advice is use 3 random words, capital letters, small letters, special characters, and numbers of your own choice. So these combination is difficult for hackers to crack the passwords. Length of password is minimum 8 characters. So these are the things advised by Home Ministry. So if you follow these advice, your password security will be significantly increased against a brute force attack. So at this hit and trial of getting your password and credential information, that is the brute force attack. They have software and they run combinations of your suppose any hackers get your information or name of your spouse, they and get your your username, they apply the brute force attack, and combination of your name, spouse name, house name, they get the information of your password. Password manager can be helpful to store your password. Let us see example of cyber attack in the world. Sony PlayStation network was attacked by hackers stealing the personal information of about 77 million PlayStation gamers. This breach has cost Sony $171 million. Target, an American retail chain, suffered a cyber attack, leaking data from 40 million credit and debit card holders of shoppers. This breach has cost company to 202 millions. Adobe cyber attack. Adobe cyber attack suffered a data breach in which hackers stole the personal data of 38 million customers, in which Adobe has to pay $1.2 million in legal fee to settle the customer claim. Yahoo cyber attack. Yahoo also suffered 500 million account has been compromised. Snapchat attack. 4.6 million username linked phone were leaked on Snapchat. They also cost 4 billion to companies. Truecaller. Most of the people, they have Truecaller in their phone. So it's my suggestion, immediately uninstall the Truecaller. The name whatever you are getting in Truecaller is not the exact name. For any person who has save their name, that Truecaller is showing that name, but that so many breach comes out in the Truecaller. Data was leaked. Hacker, they are stealing your information. So previously it was noticed that
they have steal the Indian user data around $2,000. So it's my suggestion to uninstall the Truecaller. It's not advisable. Cyber security advisory for the computer security. This is a very important thing. The following cyber security measures should be taken by for the computer security. Antivirus software is your computer best defense. Always nowadays, antivirus is very cheap. Previously, it was very costly. People avoid to install in their personal PC. So now you can go through it. Antivirus software that is the best defense against the any horse worms. That install and update antivirus software on your computer. Regularly scan your computer to make sure it's free from any virus. Some viruses may not affect your computer performance, but also could allow unauthorized access to your system. So try to use antivirus software. Use your browser help menu to download the latest update, which may include important security patches. Make sure that security features on computer software are up to date and select the automatic updation option if possible. So always see that security feature of your computer is up to date. Automatic updation option is enabled in your system. Use spyware detection software. Individually, these spyware detection software, these things is very costly, but as an organization or as an institute or as an university or an academic institute, it's my suggestion they use spyware detection software. They regularly conduct IT audit, so that at least IT audit of computers of faculties. It's not possible. It's very difficult to conduct audit of computers or any computer of lab also. So, but minimum audit of administration, finance, and faculties should be there. So many audit tools are there, so that its not purpose is not is to blame anyone, blame any employee or held responsible any employee for this any malware. This is just for protection. If anything comes in notice, that may be timely rectified. Do not access the internet without first enabling update firewall. You should always firewall updation is there in your system or laptop. So without this updation of firewall, don't use internet, especially when using DSL or cable modem in your home. If your software is identified virus or spyware, you need to remove it and change your online banking and investing password. If anything comes in notice, some virus, your antivirus tells that some virus is there in your PC. What you do? What immediately you change your banking banking or trading password. Avoid filling out forms in email messages that ask for personal financial information. Generally, most of the time, this some link is there, form is there, just how what is your salary, annual income, what is your annual cost, these things. So these are your financial information. Don't try to avoid reveal this personal information anywhere. For your security, type the key.com URL directly into your browser. Always close your browser or select exit after using the secure website. Whenever you are using any website, try to close it. When your computer is not in use, shut it down and disconnect it from internet. So this is very important thing. People, they never disconnect from internet. So this is also important things. And one thing, the officer or any
employee shall be personally responsible for safety and security of his or her computer. So this is the basic cyber awareness. One main thing is left. This is the all about the data. And what about the assets we have? So protection of information assets. What are the hardwares and assets responsible for digital or cyber or internet things? So protection and information asset is very important. Information, what are the information assets? See, a classification of asset is very important. In our general terms, we will not classify all the things in suppose in our institute or in our college. Everything is not important. Table, chair, register, we can't give importance to same importance to all of things. Similarly, in IT sectors, in computer domain, we will not give classification, same classification to all. The classification of server is different, classification of computer hardware is different, and your email and web server classification is different. So accordingly, head of the establishment or director or any cybersecurity officer or custodian, he should classify the assets, information assets in levels. What level he classifies. Let's say we'll give highest classification, highest security classification of server, web server, mail server compared to the less classification of a standalone computer. So accordingly, once you classify your information assets in your organization or in your institute, accordingly you will manage its security and protection. So protection of information assets in cyber domain is very important. Hello? Yes, sir. Am I audible now? Yes, sir. When you have to finish, please inform me. Yes, So, sir. There are two more speakers, so kindly wind up fast. Okay. So these are the important things. Thanks. Any questions from participant side? धन्यवाद सर. धन्यवाद सर. थैंक यू मैम. आपने बहुत ही तार्किक और ज्ञानवर्धक जानकारी प्रदान की. जिसमें सबसे महत्वपूर्ण 3 बिंदु थे. डोंट यूज ऑनलाइन बैंकिंग, डोंट कंडक्ट एनी परचेज, यूज ए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क. थैंक यू सर. अब मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर सरोज रानी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आकर अपने अतिथि वक्ता डॉक्टर रजनीकांत वर्मा जी का परिचय दें. सरोज जी, आपकी रिक्वेस्ट है कि समय का जरूर ध्यान रखें. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. प्रबल प्रताप सर, आप अपनी स्क्रीन शेयर स्टॉप कर दीजिए. I'm audible? Yes, ma'am. I welcome all the dignitaries and participants once again in the webinar. May I now introduce to you Dr. Rajnikant Verma ji, who is the Associate Professor in the Department of Commerce at Zakir Hussain Delhi College, University of Delhi. Dr. Verma has more than 22 years of prestigious academic and professional experience and is presently the Joint Secretary of Indian Accounting Association, Delhi Chapter, and Executive Member of Indian Accounting Association at national level.
Dr. Verma is the proud author of 13 books in the area of attitudinal changes, corporate social development, human resource management, participating management, cyber crimes laws, business laws, and industrial laws. Dr. Verma has presented more than 45 research papers on reputed academic platforms and has published more than 20 research activities in various reputed journals and edited them. He has participated in more than 12 faculty development programs, 20 workshops, 22 international conferences, and more than 75 national conferences. We feel honored to welcome Dr. Rajnikant Verma-ji in the webinar, and may I now request him to kindly present his deliberations, sir. Thank you, sir. Thank you, Dr. Saroj Rani ji. Am I audible to all of you? Yes, sir. And is my PPT visible to all of you? Yes. Yes, sir. Okay. So good afternoon, all of you. And first of all, I thank the organizing committee of this national webinar on security, cyber security awareness of Nabiyug Kanya Mahavidyalaya, Lucknow. And thanks for giving me this opportunity to speak few words on this. Our previous speaker, Dr. Prabal Pratap, has already introduced many of the concepts like ransomware, phishing, online authentication, public Wi-Fi, how to avoid it, password advices, and he has given some of the latest examples of the scams on this cyber crime. So he has already made my task very easy, and some of the topics I will avoid, which he has already covered. And I personally thank to Principal Ma'am, Professor Manjula Upadhyay Ma'am, for organizing this webinar. This is what the contemporary topic in today's world. And this is what the most prevalent cyber crime playing a devastating role in the modern India. And it is so dangerous, not because of harming, it is harming to the society and government, but criminal also able to hide their identity to a great extent. And we need to understand the difference between the cyber crime and the conventional crime, because most of the things that conventional crime turns into sometime into the cyber crime also. The word actually, the cyber crime, has not been defined in the Information Technology Act 2000, or even in the IT Amendment Act 2008, or even in any other legislation in India. But in generally, the criminal activity which take place on or over the medium of computers or internet or on any other technology, which is recognizable by the IT Act, that is covered under the IT Act, directly or indirectly. Under the existing Information Technology Act, there is no specific provision regarding the classification of like cognizable offense, non-cognizable, bailable or non-bailable or otherwise. Hence, the classification of cyber crime cases has to be decided in accordance with the section 2A and 2C, read with its first schedule of the criminal procedure. So let us welcome to the world of cybercrime. I think everyone has experienced some of the different kind of the cybercrime in their life, and better it's time to learn from the experience of others, because everyone has faced the same thing. Even I'm aware about the cyber crime, but even I have faced sometime I'm victim of the cyber crime. I will just share that how even I was trapped in this cyber crime also. So basically, cyber crime means any criminal or other offense that is facilitated by or involves the use of electronic communications or information system, including any device or on the internet or any one or more of them.
So that is what basically we mean by the term cyber crime. And this is what basically one of the cutting edge challenge that that a specialist are looking with today. And it's regularly advancing phase makes it very difficult to manage. We have the different kind of the cyber crimes, and before we move to the different kind of the cyber crimes, let us have few figures on this. All these figures are not from India. Dr. Prabal Pratap has already like discussed so many figures of the Indian prospect. I'm just discussing it some other facts and figures. Like 56.4% of those surveyed in Workswickshire had received a phishing email. So this is what one of the important kind of the cyber crime in today's world. Then under 18s are the age group most targeted for this online harassment or bullying, with the females targeted twice as much as males. And the reason is very simple, that even the older people are not very much convenient and not fascinated about this IT world. So most of the crimes are taking place with the age of like in the middle age only. Then the knowledge of online risk reduces slightly, while the feelings of being at the risk increases significantly. Obviously, when we come to know about the cyber crimes, and as much as we are aware, obviously we start avoiding, like many of the things Dr. Parval ji has already discussed, that what to do and what not to do. So once we become very aware about that, so obviously we can avoid, we can ignore those kind of the cyber crimes, and we can save ourselves from the cyber crimes. And 1 in 10 fell victim to the phishing scam. So the another one is like the different kind of the cyber crime, that is what the phishing. And Dr. Prabalji has already discussed the phishing in very detail, so I will avoid the phishing part. And nearly 1/3 of the partners have neither applied online restrictions nor have spoken to their children about the internet safety. Most of the people are busy with their own mobiles and own laptops. They're not having even the social life. Even four family members are sitting together, and you will find that all four are busy with their own mobiles. So even they don't have the social life, when they don't have the time to discuss the issues related to the cyber crimes. Only when they face it, then they recognize it, and then they suffer it. So basically, we have the different types of the cyber crimes. Like some of the things already Dr. Prabhat Pratap ji has discussed. Some of them are like banking online frauds, identity theft scams, phishing and spoofing scams, viruses, Trojan horse, revenge porn, online hate crimes, grooming, stalking, holiday frauds, dating frauds, bullying, pension frauds, hacking, online extremism, child sexual exploitations. These are some of the types of the cyber crime in the today's world which we are facing. And very honestly, I'm saying that even we have the cyber crime cell, that is of no use. Many of the times, my friends, my colleagues have reported to the police stations, to the cyber crimes. They only record, and they will just promise you that obviously we are doing something. But after all, after 15 days, after 1 month, after 2 months, you will realize that you are nowhere and you didn't get any solution from even the cyber crimes. Only you can report it. So even I don't trust on those cyber crimes. They are only for the awareness purpose, I think. And very honestly, it's a very objectionable statement also. But I think that the cyber crime is only for the cyber crime awareness, not for giving any kind of the solutions. In very few rare cases, I have found that they have provided the solution. I'm just giving you one example, that one of the colleagues who trapped into the cyber crime, and he got SMS from the Sagar Ratna kind of the SMS, that buy one and get one thali, something like that.
and then he showed his interest, and then one person contacted him. Then he just suggested him to pay at least 1 rupee, that so that he can locate the location and he can deliver the thali and all that. And as soon as he did that, almost 30,000 was withdrawn from his account. And remember, they don't withdraw in the lump sum amount. They withdraw in even less than 10,000, 9,995, 96, 9,998, because they know the limit of withdrawals. They most of the time withdraw even less than 10,000. And 3 transactions, it means that was almost of 30,000. When he shared with me, he reported it to the crime branch also, cyber cell also. He gave me that number and just contacted that person. And very interestingly, that these persons basically in touch with the persons. Like I called him that you did this with me. And he said, yes, sir, ab ho gaya, so ho gaya, ab kya kar sakte hain? Then I realized that this person is from Jharkhand or from that Jamtara area. I think you must have watched the episode of Jamtara. You just watch it on Netflix or somewhere. You will come to know about the financial frauds, what kind of the financial frauds they are doing actually. And when I contacted them and I realized them that I also belong to the same place and I use the same language. And very interestingly, they refunded me 20,000 after 10 days. And they said, कि सर बाकी पैसा already आगे process में जा चुका है. It means somewhere the administration is also involved in promoting those kind of the cyber crimes. So better be aware and take the precautions as much as you can. And this is not the like entire list. This is just a tip of the iceberg. Oh, sorry. Thank you, sir. Online bank frauds, is it visual? दिख रहा है सर. Okay. Basically, we will discuss the whole concept into 2 things. One, that what are the different kind of the frauds, and the another one, that how we can avoid those things. Like online bank fraud, that is the most widespread forms of cybercrime, and more people use their phones and computers for banking, business transactions, and internet shopping, and they become more attractive to cyber criminals who use email messages, website, chat rooms, message boards, and social networks to get access to your personal information. Phishing and spoofing are the most common types of the online frauds. So whenever you are using your email or even the SMS or even you are using the chat room, please avoid any kind of the sharing of the personal information. Even if you are on the chat rooms, don't use your camera. Don't give your any contact number to anyone. There are a number of the phishing elements are on the chat rooms and even on the websites. Even they send the email. I think Dr. Prabhat Pratap ji has already discussed that do not open the attachments, do not open it, avoid the spams. You categorize your email into different parts like personal, spam, and forum kind of things, so that you can avoid those things, and without even opening your email box, you can just delete it. Then another kind of the cyber crimes, that is about the identity theft. Basically, that involves the stealing of the personal informations and credential, including the account details of a user. Like I just shared that experience, that Sagar Ratna person just sent a link to that person to my colleague, and when he entered those informations, he just hacked his all personal informations, the card numbers, the CVV and everything, and the all accounts detail. So we need to avoid that. And they use like name, the social security number, bank or credit cards of the financer, and even avoid your like hard disk kind of things like keyboards, because through the keyloggers,
they just identify that which keyboard key button you are pressing. So they install the programs on your device and they capture the types of keyword you are using. Phishing, I think Dr. Pravalji has already discussed, so I'm just avoiding it. Phishing, like email mess that you may get it from the email message, even it can appear it from someone with whom you do business. It is designed to trick you into providing username and password. Then phishings are some of the like examples are there. The offer seems to very good to be true, but in general that is not the very true one. Sometimes we will find a spelling mistake, so you need to be very careful in using any kind of the websites or email. You will find it similar kind of the things. I'm again just giving you one example, like which I suffered. I just booked my flight ticket of my wife, and I was just navigating on internet, and I found a website by name even Travelook. Even I have not served the legal notice to that, but I need to do that. That website is Travelook. So even I just suggest you not to use that website, Travelook. There are many websites, and that website was providing me the air tickets slightly cheaper than the Killer Trip and other one, Make My Trip. So I just logged it and I just booked a ticket. When I just entered my all financial transactions and I clicked OK, my account was deducted, and even I didn't get the tickets on my email. I just contacted that contact numbers, like online contact numbers, and they committed me, sir, we have not confirmed your ticket and you will get your refund within 15 days. Again, after 10 days, I called up them. They told me, sir, it is not, the 15 days has not been over. So please wait for that 15 days. And when I called up them after 15 days, even after a month, even they don't pick the call, even they don't reply me, even they have stopped messaging me. Like previously, I was getting the email that you will get your refund by this date. So this kind of phishings are there. There is a sense of urgency to respond to the email's request. You will find such kind of the in email behaviors, like links do not go to the place you would expect them to. That will go to somewhere else. The sender address is not a genuine email, and instead of halifax.co.uk, it is halifab.co.uk. This is what one example I have shown. And beware of all calls and text too. This is what the another kind of the financial frauds, like dear bank account owner, I regret to inform you that fund transfer sent to you on your behalf was held by our bank, and this kind of the SMS you will get from some of the like through SMS, or like your card has expired, something like that. You will get the call and they will ask you to share the OTP. So please beware of those things. Do not share your OTP or any financial transaction informations, like any card number, any CVV number, or anything. Then a spoofing, that is basically the fraudulent or malicious practice in which communication is sent from unknown source or disguised as a source known to the receiver. Sometimes this is also very important, revenge porn. This is also a kind of the cyber crime. We don't consider it generally, but this is also kind of the cyber crime, where like pornography is distributed to the sexually explicit images or video of individuals without their permissions. That also comes under the cyber crimes. And even we don't suggest anyone to use their own pictures, even of a good quality of the pictures. We should avoid all those things. Then online hate crimes are also there. Like sometimes you will find that some kind of the hatred kind of the message will be on any social network or somewhere else. That also comes under this cyber crimes. And you may come across a lot of materials on the internet that offends you. A small portion of it is actually illegal. That basically comes under the defamations.
Hate materials online is recorded by police as a hate crime when a crime defined in law is committed with the hate motivations. And when online material is hate motivated but doesn't mean the threshold for a criminal offenses, it is recorded as a hate incident only. So all recording is vital to monitor the community questions. Cyber grooming, that is when someone befriends as a child online and builds an emotional connection with future intentions of sexual abuse, sexual exploitation, or trafficking. So please avoid your child to use any kind of the chatting sites. Then stalking, I think this is what the general terms, but that is also comes under the cyber crime when someone follows the emails, the chat box, or like sending the unwanted message to that person. So like made unwanted phone calls and hangups, late unwanted text messages or voicemails, broke into the victim's car or home, left victims unwanted cards, letters, flowers, or presents, lets strange or threatening items, sent unwanted emails or social media messages, watched, followed, or spied on victims, approached victims, showed up places where victim was. So this is what all kind of the like cyber crime. Holiday frauds, I think you must have heard of the Mahindra and all that. Many of the times similar sites are there, similar kind of the companies are in the market, and this basically they are doing the fraudulent business, and that is travel company places adverts for holidays, detailing flights, hotel booking, etc. on the internet. The holidays are advertised at incredible low price, and people get attracted by those things. The adverts refers to the telephone numbers or a website to book your holidays, and after booking, you are sent documents with the travel and accommodation details. But in reality, either your holiday doesn't exist at all, or you will not get part of what you paid for. So this is a kind of the holiday fraud. Dating frauds are also there. There are many sites. Dating and romance scams often take place through online dating websites, but scammers may also use the social media or email to make the contacts. They have even been known to telephones and their victims as a first introduction. So please never share your mobile number with any of the stranger on any of the social network sites. Then this is what the cyber bullying. It is that take place over digital devices like cell phone. It occurred through SMS, text, and apps, or online in social media forums or gaming, where people can view, participate in, or share content. Again, I suggest not to allow your child to play online games and make friendship on that. The most common place where the cyberbullying occurs are basically the social media like Facebook, Instagrams, Snapchats, Twitters, SMS, instant messages, email. Some of the cyberbullying are there like harassment, abuse, humiliations, threat, then distressing, attracting, something like that. Hacking is another kind of the cyber crimes. This is white hat or sneakers. But sometimes we use that hacking is ethical also, sometimes it's unethical also, and depends that what kind of the ethical practice is it. So attempt to find security holes in a system to prevent future hacking, that is known as what the sneakers. Those who do it with the malicious intent, that is known as black hat or crackers. Those do it illegal but not malicious intent, that is what the gray hat. This is what the kind of the hackers. Then hacktivism, that is hacking to make a political statement. This is what basically followed by the political parties. Data breach, again, some of the sensitive data is stolen basically or viewed by someone not authorized, that is what the unauthorized, and the another kind, that is what the cyber terrorism also. Similarly, there are various kind of the virus and malwares, and as Dr. Prabhat ji was suggesting you to use the original antivirus. Now it's very cheaper. Even if you pay around $2,000, you will get the antivirus for 3 years or even for the 3 users. So it's very cheaper one, and never use any kind of the pirated kind of the antivirus.
because that is the only way you can protect your systems with the virus. And then passwords, this is what he has already said, that most common password generally they keep like 1 2 3 4 5 6. Sometimes they keep it 1 2 3 4 5, something like. And never use the password which is very like familiar to you, like your date of birth or something like that. Tips, I think Dr. Prabhat ji has already said that safe online name, you can keep it. A strong password you can use. Basically, that is a combination of upper, lower number, a special, complex, robust with OTP. 2 steps verification is very important. Like even if whenever I use my email account, that gives me a message on my mobile that is it you or someone else is like logging on your email. So that kind of the 2-step verification, you must use it to avoid any kind of the cyber crimes. And choose a line from it, and like just think of your favorite book, film, songs, poem, and choose a line from it to keep the password. Take the first letter of each words. Keep changing your password after every 6 months. These are some of the tips that you can use the password. Be careful of links and attachment in emails. Use different passwords for online accounts. Do not share username and password. Many of the times, many of us like keep the username and password on email. So please don't do that. Even as Prabhat ji was saying that avoid using any kind of the public Wi-Fi, because that is not the trusted place from where you can log in. And even if you have not logged out and someone may get your messages, or someone may do some kind of the mischievous things from your email. So check website security, and if you are ever unsure about something online, do your research. Use the antivirus. Mind conditioning is very important. Basically, whenever the hackers use any kind of the hacking, they go for the detailed behavior of the consumers. They basically look for the spending patterns, what kind of the patterns they are using on the different kind. Similarly, they also look for the lifestyle choices, what kind of the lifestyle you are living, and what kind of the business or the transactions or you are doing on online. Similarly, their financial status, they also look for. Similarly, the earning brackets they look for, the list of dependents they look for. Then they also look for the attitudes towards the friends and family. Then the dependency upon the technology, time spent on the online activities. These are the things they observe before hacking your informations. Like some of the tips are like you never share your personal identification informations. For example, many of the times Mahindra Club will invite you, and they will ask you number of the informations, and they may misuse it. Even when you are visiting into any mall and they ask you to fill up this form, please don't do that, because they are getting the information. They are just knowing the behavioral pattern of your expenses. So do not react. Cross check of spoofing. Cross check whether providing and what they are providing and whatever you are getting. Do not upload your pictures with the HD camera. Do not use any app or games on Facebook or social networks. Do not accept any kind of the friendship request on any kind of the social networks unless and until you know them personally. Do not post too much information on social network, because I just want to share that someone tracked my Facebook and I have deactivated my Facebook. And why is it so? Because that lady tracked my all informations, what I do, what kind of the activities I do in the colleges, what kind of the seminars I am attending, what kind of the CVs I am handling, what kind of the where I am living, what is my personal number. Everything was like they got it from my social network site. So be selective about what information you make it public. Do not upload. Yes, please. सर थोड़ा समय का ध्यान रखिए प्लीज. Okay. So these are the top tips. I think many of the things they have already
हेलो सर, स्क्रीन ऑफ हो गई है आपकी। हेलो सर। हो जाए तब आप एग्जाम को समझ मैं आपकी मदद करने के लिए 100% तैयार हूं। हेलो सर। हेलो, हमें लगता हेलो है डॉक्टर सर। साहब की स्क्रीन ऑफ हो गई। डॉक्टर अच्छा साहब का नेटवर्क से बाहर हो गए हैं। ओहो मे बी। धन्यवाद डॉक्टर रजनीकांत वर्मा सर। बेटर लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ द अदर्स। आपने इस पंक्ति के द्वारा बहुत कुछ कह दिया, धन्यवाद आपको फिर से। मैं अब अपनी डॉक्टर सुनीता सिंह को बुलाती हूँ जो आए और डॉक्टर मनोज पांडे सर का संक्षिप्त परिचय दें। समय सीमा का जरूर ध्यान रखें प्लीज। Thank you, ma'am. सुनीता। Thank you, ma'am. It is an immense pleasure for me to welcome our next speaker, Dr. Manoj Pandey, sir, who is presently working as Associate Professor in Department of Law, JNPG College, Lucknow. He is one of the very familiar face among all of us. He is a president of our Lucknow University Associated College Teacher Association. Beside his social stature, he has vast experience in the subjects related to criminal law, CRPC, law related to women and children, intellectual property law. He obtained LLB, LLM degree from University of Lucknow. He also pursued LLD from University of Lucknow. He has published more than 50 papers in several national and international journals of repute. He has presented more than 100 papers at various platforms. Presently, he is holding a position of president of LUACTA. Besides this, in the past, he has also held the position of treasurer as well as general secretary in LUACTA. So without ado, I would like to call respected sir for his talk. Thank you, sir. आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. सबसे पहले तो नवयुग कन्या महाविद्यालय का आभार, धन्यवाद कि उन्होंने हमें बोलने का मौका दिया। प्राचार्य प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय जी का आभार, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का आभार। और समय की सीमा है, मैं देख रहा हूँ 1:22 हो गया है और हमें लगता है परीक्षाएं भी हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि बड़ा ऐसे टॉपिक पर आज का वेबिनार रखा गया है। एक बात बताते हुए मैं अपनी बात करूं, हमें लगता है कि हमसे पहले जो दोनों वक्ता थे, प्रताप जी जो साइंटिस्ट हैं और डॉक्टर रजनीकांत वर्मा जी जो कॉमर्स फैकल्टी से रिलेटेड थे, और उन्होंने लॉ की बहुत सारी बातें कही और बताया उन्होंने। जो सबसे बड़ी बात है कि एक अपनी बात शुरू करूं उससे पहले, चूंकि लॉ का विद्यार्थी, विधि का विद्यार्थी होने के नाते और लीगल अवेयरनेस की ही बातें हो रही थी। साइंटिस्ट हैं डॉक्टर प्रभात प्रताप जी, उन्होंने साइंटिफिक इन्वेंशंस भी बताए, प्रिवेंशंस भी बताए। हम देख रहे थे कि जो साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस पर रजनीकांत जी ने कहा, उन्होंने भी अवेयरनेस और प्रिवेंशन दोनों की बात किया उन्होंने। अब हम लोग अगर बात करें, देखें तो जो दोनों लोगों की बातों से लबोलुबाब, अब हमें लगता है कि हम अपनी बात कहने के बजाय अगर हम पूरे लॉ के इंटायर लीगल सिस्टम की बात कर ले, साइबर लॉ पर या लीगल सिस्टम पर, तो हमें लगता है कम समय में बड़ी बात हो जाएगी। और जो सबसे बड़ी बात है साइबर लॉ के बारे में, ये एक सूचना पहले दे दूं कि जो नया सत्र आ रहा है, यूजीसी ने नए सत्र में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों लेवल पर साइबर सिक्योरिटी को पढ़ाने का निर्णय लिया है। और नवयुग महाविद्यालय पहला महाविद्यालय हमें लगता है पूरे देश में जिसने सत्र जो 2022-23 है, जिसमें यूजीसी ने लिया है, और 2020 में भारत सरकार ने निर्णय लिया था कि जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाया जाए। तो सबसे बड़ी बात है जो मुझे समझ में आता है साइबर सिक्योरिटी के मामले में या लॉ के मामले में, कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन ही बचाव कर पाएगा अगर आप सबके उनको सुन लें। और दूसरा कि पूरे दुनिया में अगर देखा जाए तो पूरे दुनिया में पहला रेवोल्यूशन हुआ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और दूसरा रेवोल्यूशन हुआ है आपका ये इसको कह लिया जाए कंप्यूटर रेवोल्यूशन कह लिया जाए या
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो इंटरनेट का रेवोल्यूशन है उसका रेवोल्यूशन कह लिया जाए, या साइबर रेवोल्यूशन कह लिया जाए, या जो भी इसे कहना चाहे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रूप में से जो नाम देना चाहे हम लोग, ये सेकंड रेवोल्यूशन है। और जो सबसे बड़ी बात है कि अगर हम देखें प्रिवेंशन के मामलों में, तो हिंदुस्तान में या पूरे दुनिया में, हर दुनिया में उसका सब्सटेंटिव लॉ होता है, एक प्रोसीजरल लॉ होता है और एक एविडेंस होता है। क्योंकि एविडेंस एक्ट से ही सारी चीज, जब तक कोई भी चीज बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं हो जाती तो वो सस्टेन नहीं करती। और जो हमारा ये हम जो साइबर लॉ है या जो साइबर की चीजें हैं वो इसे देखें तो आज पूरी दुनिया एक ग्लोबलाइज्ड विलेज हो गई है। तो ये क्राइम केवल नेशनल नहीं है, इंटरनेशनल है। तो प्रश्न जो है, इसीलिए हमने कहा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन ही इसमें बचाव कर पाएगा। और अगर हम देखें पूरे इंटायर क्रिमिनल सिस्टम को, क्रिमिनल लॉ सिस्टम को, साइबर लॉ में भी साइबर क्राइम है, क्राइम की बातें जब हम करने लगे तो हम क्राइम में ट्रेडिशनल हमारे यहाँ लॉ था, 1860 में आईपीसी बनी और आईपीसी ने जो हमारा अपराध था उस अपराध को दो भागों में बांट दिया। उसने एक ऑफेंसेज अगेंस्ट ह्यूमन बीइंग या ह्यूमन बॉडी और दूसरा ऑफेंसेज अगेंस्ट प्रॉपर्टी कर दिया। और हालांकि 1860 में बना, अंग्रेजों ने 1872 में एविडेंस बनाया, 1873 में सीआरपीसी बनाई, बिना एविडेंस एक्ट या बिना सीआरपीसी के। आईपीसी से 12 साल तक अंग्रेजों ने इस देश में कहर भी बरपाया। खैर हम लोग आज उसकी बात करने भी नहीं जा रहे हैं। हम लोग जो बात कर रहे हैं कि जो वर्चुअल स्पेस है और दैट इज नोन एज साइबर स्पेस, और इसके लिए जो कानून बनाया गया वो कानून दैट इज कॉल्ड साइबर लॉ। तो अब लॉ में एक बहुत बड़ी चीज होती है, हर कानून को बनाए जाने से पहले उसके कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ रीजंस होते हैं। बिना ऑब्जेक्ट के, बिना रीजंस के, यानी मस्ट बी सम ऑब्जेक्ट्स एंड सम रीजंस। कोई भी लॉ बनाया जाता है तो उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को, उन्हीं रीजंस को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। तो जो हमारा साइबर लॉ है, जो साइबर क्राइम है, जो अब एक तरीके से उसे कह लीजिए इंटेलेक्चुअल क्राइम, वो इंटेलेक्चुअल क्राइम ही है। और अगर उसका क्लासिफिकेशन कर दीजिए, जैसे अगर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन आईपीसी के ऑफेंसेज का किया, तो अगर साइबर क्राइम का क्लासिफिकेशन कर दिया जाए तो इसका भी क्लासिफिकेशन दो हो सकता है। जैसे आईपीसी में हमने क्लासिफिकेशन कर दिया ऑफेंसेज अगेंस्ट ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन बॉडी, और दूसरा ऑफेंसेज अगेंस्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में भी ह्यूमन बीइंग के अगेंस्ट जो ऑफेंसेज है, और वो हम जैसे मर्डर है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, हर्ट है, ग्रीवियस हर्ट है, देयर आर सो मेनी ऑफेंसेज। और अगर प्रॉपर्टी के ऑफेंसेज में चले तो थेफ्ट है, डकैती है, रॉबरी है, जो रैंसम भी साइबर लॉ में है। तो अगर क्लासिफिकेशन करें उनसे तो ऑफेंसेज आर मोर और लेस दे आर सिमिलर काइंड ऑफ ऑफेंसेज। और अगर साइबर क्राइम्स का करें तो इनका भी दो तरीके से किया जा सकता है क्लासिफिकेशन। एक वो जो हैकिंग है, जो कंप्यूटर पे हमला किया जा रहा है, ऑफेंसेज अगेंस्ट कंप्यूटर, और दूसरा ऑफेंसेज बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर से ऑफेंस भी किया जा रहा है, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज है वो कंप्यूटर से किया जा रहा है। और कंप्यूटर से, और कंप्यूटर पर भी वायरस के हमले हैं या दूसरे हमले हैं, तो उस तरीके के जो हमले हैं वो भी है। और हम अब सिविलाइजेशन के उस इरा में है। एक बात, दूसरी बात की जब इंटरनेशनल क्राइम है तो इंटरनेशनल क्राइम किसी नेशनल का, जब भी कोई बात आएगी मुकदमा दर्ज करने की, अगर क्राइम इंटरनेशनली होगा तो मुकदमा दर्ज करने में प्लेस ऑफ सुइंग, प्लेस ऑफ अकरेंस, इसमें बड़ी दिक्कत आएगी। और इंटरनेशनल लेवल पर अभी भी कोई ऐसा, बहुत यूएनजीटी की बात है कि बना लिया जाए, एक लॉ बना लिया जाए, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर कोई इतना मजबूत अभी कानून नहीं बना है। बुडापेस्ट कन्वेंशन की बात है, लेकिन बुडापेस्ट कन्वेंशन का जो आर्टिकल 32A है, आर्टिकल 32A हमारी सॉवरेनिटी पर खतरा महसूस होता है, इसलिए अभी भारत सरकार ने उस टीटी पर कोई अपने सिग्नेचर नहीं किए हैं, क्योंकि वो जो पर्सनल डेटा है उस तक वो उसकी पहुंच की बात वो होती है कि भाई वो शेयर करना पड़ेगा या वो उसे देख सकता है, चेक कर सकता है, तो इससे देश की सॉवरेनिटी पर खतरा होने की बात है। तो उन खतरों की वजह से दिक्कतें हैं। और जहां तक अगर हम देखें तो हिंदुस्तान में 1999 में सबसे पहले पार्लियामेंट में बिल लाया गया 1999 में, और उस 99 के बिल को जो पार्लियामेंट में रखा गया उसे सेलेक्ट कमेटी को रेफर कर दिया गया था। और 15 मई
2000 को with some suggestions, some modifications, some amendments उसे पार्लियामेंट में रखा गया और पार्लियामेंट ने दोनों हाउसेज ने उसे पास कर दिया। और हम देखें तो हमें लगता है कि पार्लियामेंट से वो पास होने के बाद, प्रेसिडेंट का एसेंट मिलने के बाद, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 आ गया और इसका अभी तक केवल एक अमेंडमेंट हुआ है 2008 में। बाकी अभी उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स तो नहीं हुए हैं, लेकिन साइबर सिक्योरिटी, साइबर लॉ और साइबर लॉ के रूल्स बनाने की बात की गई है और वो बनाया गया है। तो अब आईपीसी में सेक्शन 29 में डॉक्यूमेंट की बात की गई है कि कौन से डॉक्यूमेंट को डिफाइन किया गया, दस्तावेज कि कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो लॉ में साक्ष्य के रूप में लिए जाएंगे। व्हाट काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर टेकन एज एन एविडेंस इन द लॉ। और एविडेंस पहले जब तक इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी एक्ट नहीं था 2000 से पहले, तो अगर इस तरीके के जो टेक्निकल एविडेंसेज आते थे, चाहे वो रिकॉर्डेड हो, रिकॉर्डिंग हो, चाहे दूसरा हो, क्योंकि उनमें टेम्परिंग की संभावना थी, तो लॉ में, क्रिमिनल लॉ में एक फार्मूला है कि जब तक गिल्ट किसी का बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, और जो एविडेंस है वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट अगर प्रूव नहीं हो जाता है तो दैट शैल नॉट बी टेकन इनटू एज एविडेंस। तो अब इस एक्ट के बनने के बाद इसकी एविडेंटरी वैल्यू हो गई, आईपीसी में अमेंडमेंट हो गया और आईपीसी में भी आईटी एक्ट को शामिल कर लिया गया और डॉक्यूमेंट में जो इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जो भी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट के रूप में स्वीकार कर लिए गए और डॉक्यूमेंट के डिफिनीशन में आ गए। तो एक तो ये है, दूसरा कि अभी प्लेस ऑफ सुइंग को लेकर के अगर विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लेस ऑफ सुइंग तय हो जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है अवेयरनेस की, कि जो हमारी पुलिसिंग सिस्टम है, व्यवस्था के लिए दो सिस्टम है व्यवस्था चलाने के लिए, एक तो हमारा पुलिसिंग सिस्टम है, दूसरा जुडिशियल सिस्टम है, जुडिशियल क्रिमिनल जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन या जुडिशियल सिस्टम का ले। जो हमारा पुलिसिंग सिस्टम है वो अभी जो इंटरनल, हम भाई पुलिस हमारी एक है, पुलिस हमारी बहुत वेल इक्विप्ड नहीं है, वेल ट्रेंड नहीं है, और जो पुलिस के सामने जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि वेल इक्विप्ड न होने से, वेल ट्रेंड न होने से हम जो ट्रेडिशनल क्राइम्स है अभी उन्हीं को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जैसे मर्डर है या थेफ्ट है, रॉबरी है या दूसरे तरीके के जो अपराध है, अभी वही कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। और दूसरा जो हमारी कोर्ट्स है वो इतनी लिमिटेड नंबर में है कि वहाँ सिविल सूट्स हैं, क्रिमिनल सूट्स हैं, जो इंटरनल डिस्प्यूट्स हैं, जो दूसरे डिस्प्यूट्स हैं, चाहे वो क्राइम के दूसरे जो फिजिकल क्राइम्स हैं उनके डिस्प्यूट्स हैं, हम उन्हीं को सुलझा नहीं पा रहे हैं। और जो हमारे जजेज भी हैं वो अभी उतने वेल इक्विप्ड नहीं है। तो जो साइबर के मामले हैं, अभी साइबर के मामलों में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारे पास हमारा जो पुलिसिंग सिस्टम है वो भी कमजोर है। अभी हमारे दोनों विद्वान साथी कह रहे थे कि प्रशासन मिला हुआ है, तो जब सिस्टम ही कमजोर है, सिस्टम में जब भी कमजोरी होगी तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा, करप्शन बढ़ेगा, स्वाभाविक है, ऑब्वियस है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन हमारा पुलिस सिस्टम बहुत कमजोर है। अगर पुलिसिंग को देखें तो पुलिस सिस्टम हमारा जो रेशियो होना चाहिए, जिस तरीके की आबादी है और जिस तरीके से पुलिस को ट्रेंड होना चाहिए, पुलिस तो अभी ट्रेडिशनल क्राइम्स को ही कंट्रोल नहीं कर पा रही है। रोज अखबारों में अगर आप देखें, सरकारों के लेवल पर भी रोज मॉनिटरिंग अगर होती है तो साइबर क्राइम्स की कम होती है, जबकि हमारे प्रभात जी ने बताया था 12.5% उन्होंने डेटा दिया था कि इकोनॉमिक्स क्राइम्स के जो डेटाज हैं वो आए हैं, लेकिन पुलिसिंग सिस्टम हमारा उतना इफेक्टिव नहीं है, कोर्स हमारा उतना इफेक्टिव नहीं है। तो अब जरूरत किस चीज की है इसमें? अब आप अगर आप देखें तो सोशल मीडिया भी बहुत तेजी से आगे बढ़ गया है। हम एक तरफ हमको फंडामेंटल राइट मिला हुआ है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, और फंडामेंटल राइट में हमें राइट टू स्पीच मिला हुआ है। फंडामेंटल राइट में देयर आर सो मेनी फंडामेंटल राइट्स, उसमें हमें कई स्वतंत्रताएं दी गई हैं। यूनाइटेड नेशंस ने भी फंडामेंटल राइट्स की बात की है, तो वो भी है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया आ गया है, तमाम चीजें शेयर हो रही हैं और तमाम हैकिंग की चीजें शेयर हो रही हैं। अभी हमारे दोनों विद्वान साथियों ने उनमें बहुत डिटेल में प्रकाश डाला है, बहुत ही विस्तृत रूप से उस पर कुछ कहा है, तो इसलिए उस पर बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना है कि साइबर लॉ के लिए जो असली आवश्यकता है, जो मेरी समझ में आ रहा है, कि हम अपने विद्यार्थियों को शैक्षणिक संस्थानों में इसका अवेयरनेस किया जाए और शैक्षणिक संस्थानों के जो हमारे शिक्षक हैं या छात्र हैं इसके एक्सपर्टीज तैयार किए जाए और वो समाज में लोगों को अवेयर करें।
क्योंकि अवेयरनेस के अलावा अभी लॉ इतना मजबूत नहीं है और पुलिसिंग सिस्टम या लीगल जो क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम है हमारा उतना मजबूत नहीं है कि इन सारी चीजों को कंट्रोल कर सके। और बाकी प्रिवेंशन के लिए जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं और डे पर डे जो साइंटिफिक इन्वेंशंस हैं उनसे जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनको पर डे वेल इक्विप्ड किया जाए, शायद इसकी ज्यादा आवश्यकता है। और बहुत कुछ न कहते हुए मैं समय देख रहा हूँ 1:40 हो गया है, बहुत सारा समय न लेते हुए नटसेल में बस इतना मैं कहूंगा कि अपने विद्यार्थियों को या समाज में जो भी हो किसी भी व्यक्ति को अब इस बात के लिए अवेयर किया जाए कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और साइबर क्राइम बढ़ रहा है, इसलिए कहीं भी ऐसे किसी भी साइट को कोई मतलब एसेस ना करे जिसकी जानकारी न हो, या जो अभी हमारे दोनों साथी बता रहे थे इस पर ध्यान दिया जाए। और प्रिवेंशन के लिए लोगों को सोशली अवेयर किया जाए, सोशल मीडिया के माध्यम से अवेयर किया जाए, क्योंकि लीगली या क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम से अभी न्याय मिलने में बड़ी देर है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सभी का आभार, आप सबने बोलने का मौका दिया और समय का अभाव है, अगर इस पर बोलना शुरू किया जाए तो हमें लगता है घंटों बोलने के बाद भी समय कम रहेगा। और ये विषय इतना बड़ा है, इतना रिसेंट है, इतना बड़ा है, लॉ से रिलेटेड है। और अगर कंपैरेटिव लॉ का अध्ययन कर लिया जाए कि अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, अगेंस्ट प्रॉपर्टी, तो दोनों चीजें अगर क्लासिफिकेशन में देख लिया जाए तो कंप्यूटर को भी अगर ह्यूमन बॉडी की तरह एक्ट कर रहा है, अगर उस पर हमला होता है तो ह्यूमन बॉडी की तरह हमला होता है। या यदि वो किसी पर हमला करता है कंप्यूटर से भी अब टेररिस्ट एक्टिविटीज या दूसरे एक्टिविटीज या हैकिंग या दूसरे तरीके के जो क्राइम्स हैं वो हो रहे हैं, तो अगर वो है तो सिमिलरली जो हमारे ट्रेडिशनल क्राइम्स थे उन्हीं की तरह ये भी क्राइम है, लेकिन इस क्राइम का स्वरूप दूसरा, इसका जो स्वरूप है वो दूसरा है। तो इसके लिए अभी उस तरीके का मैकेनिज्म नहीं है लीगल सिस्टम में, क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में। तो सबसे ज्यादा आवश्यक है सोशल अवेयरनेस की, और सोशल अवेयरनेस का जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया है, उसके जरिए लोगों को अवेयर किया जाए, एजुकेट किया जाए, टू एजुकेट द पीपुल्स, टू एजुकेट द सोसाइटी। और यूजीसी अब इस सत्र से 22-23 के सत्र से खुद ही साइबर लॉ को सिलेबस में ला रही है, यूजी लेवल पर भी और पीजी लेवल पर भी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में बहुत जल्दी अवेयरनेस की जो चेन है जो इन शैक्षणिक संस्थाओं से निकलेगी, समाज में निश्चित रूप से बड़ा बदलाव लाएगी। जय हिंद, जय भारत। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। धन्यवाद डॉक्टर मनोज पांडे सर, आपकी ये पंक्ति आपके चरित्र को विघटित करती है। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई, आपकी दी हुई जानकारी से हम सभी लाभान्वित होंगे। फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपने बताया। साइबर लॉ के लिए हमें अपने विद्यार्थियों को जागरूक करने की जरूरत है, इसी कारण हम लोग आज इस पे भी बात कर रहे हैं। अब मैं अपनी विद्वान विदुषी मनीषी डॉक्टर मंजुला उपाध्याय मैडम को बुलाती हूँ। वो आकर इस वेबिनार की जो चेयरपर्सन भी हैं वो आए, उन्हें निवेदित करती हूँ कि आज के वेबिनार पर प्रकाश डालें। सभी को नमस्कार। और जो आयोजक हैं इसके, हमारा जो इको क्लब है उसको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं कि उन्होंने ऐसे टॉपिक पर आज साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी के अवेयरनेस पर एक वेबिनार का आयोजन किया और इतने विद्वत जो है वक्ताओं को आमंत्रित किया, ये भी मैं कहूंगी। और जो हमारे पहले वक्ता थे प्रबल प्रताप जी और रजनीकांत वर्मा जी, उन्होंने साइबर जो क्राइम्स हो सकते हैं, किस प्रकार से आपका डेटा लीक हो सकता है, क्या क्या मेथड्स हैं जिससे साइबर क्राइम होता है, उन सारी चीजों के बारे में बहुत ही डिटेल्ड में पीपीटी प्रेजेंटेशन से आपको बताया। और ये भी बताया कि कहाँ कहाँ आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो उसका जो आप थ्योरेटिकल कहेंगे वो एप्लीकेशन और किस तरीके से आप बचाव भी कर सकते हैं उस बारे में बताया। और दूसरे वक्ता जो हमने रजनीकांत वर्मा जी हैं और प्रबल प्रताप जी ने, दोनों ने इस चीज को कवर किया। फिर हमारे जो थर्ड वक्ता डॉक्टर मनोज पांडे जी हैं जो विधि विशेषज्ञ हैं यानी लॉ के एक्सपर्ट हैं, तो उन्होंने साइबर लॉ से रिलेटेड बताया कि अगर क्राइम हो जाता है तो उसके बाद आप
कैसे उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, आगे उसमें किन किन चीजों पहलुओं को आप मानेंगे कि क्राइम हुआ। पहले तो अपराध हुआ ये मानना जरूरी है, और अपराध हुआ कहाँ, इसके लिए लॉ की फील्ड में भी मुझे लगता है कि अब हमें साइबर एक्सपर्ट्स की जरूरत है। और जो हमारा लॉ 5 ईयर ऑनर्स का कोर्स होता है, मुझे लगता है इसीलिए उस कोर्स में जो विविध एस्पेक्ट्स हैं, आयाम है, वो समाज से जुड़ते हुए जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, फॉरेंसिक से रिलेटेड है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, सभी का ज्ञान उनको दिया जाता है। क्योंकि अब पहले जैसे आप ट्रेडिशनल नॉलेज लॉ की खाली लेके और आईपीसी की धाराएं जान के पुलिस में या इन चीजों से नहीं रह सकते हैं। आपको जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है या जो हमारे लॉ के एक्सपर्ट्स हैं, और जैसा हम लोग हैं कि हमारी जिम्मेदारी है कि जो हमारे युवा हैं वो इसके प्रति ज्यादा डिस्पोज्ड हैं, जो सोशल मीडिया है इस सब पे ज्यादा एक्टिव हैं, तो उन सब के लिए उनको सचेत करना, और खासतौर पे हमारा नवीन कन्या महाविद्यालय छात्राओं का इंस्टीट्यूशन है, तो उनकी सिक्योरिटी, हमें फिजिकल सिक्योरिटी पर तो ध्यान देना ही है, पर साथ ही साथ वो कहीं पे मान लीजिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़ती भी है या कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करती हैं, तो कुछ फ्रॉड उनके साथ ना होने पाए। तो मुझे लगता है कि बहुत सारा ज्ञानवर्धन हुआ होगा। और जैसा कि मनोज पांडे जी भी कह रहे थे कि यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो 2 बजे से नेक्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है, तो टीचर्स भी बिजी हैं, स्टूडेंट्स तो जो फ्री हैं वही जुड़े हुए हैं, तो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगी। फिर भी मुझे लगता है कि हमें, जो हमारे सर लोग ने भी बताया कि हमारे जो मेल्स होते हैं या सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं, इनमें समय समय पर अपने पासवर्ड्स को चेंज करते रहना चाहिए। जैसे मनोज पांडे जी ने भी कहा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, क्योंकि हमारा जो लीगल एस्पेक्ट है शायद अभी उतना स्ट्रांग नहीं हुआ है। हालांकि गवर्नमेंट जो है अलग से साइबर क्राइम सेल्स और जो फाउंडेशन टाइप के बना रही है कि लोगों के बीच जानकारी जाए, और ये हमारा मुहिम जो है चल रही गवर्नमेंट के ही आदेश पर कि जो शैक्षणिक संस्थान है, जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें जो मंथ का फर्स्ट वेडनेसडे है, उस फर्स्ट वेडनेसडे को हमको साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम, इन सब से रिलेटेड कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करानी है। तो नवीन कन्या महाविद्यालय लगातार कुछ विगत महीनों से ये एक्टिविटीज करा रहा है। कभी ये किसी न किसी सेल की जिम्मेदारी होती है कि हर महीने उस एक्टिविटी को कराने की, तो एनसीसी भी करा चुका है, स्पोर्ट्स वाले स्पोर्ट्स सेल भी करा चुका है, बाकी और भी सेल्स करा चुके हैं। उसमें से आज इको रिस्टोरेशन क्लब ने ये जिम्मेदारी ली, और मैं उनको जो है शुभकामनाएं देती हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छा वेबिनार करवाया, और इतने विद्वत जो हमारे वक्ता थे उन सबको हमारे बीच बुलाया, और हमारी छात्राओं का कुछ ना कुछ नॉलेज गेन हुई होगी, और उनको ये समझ में आया होगा कि वो जो अपने डिटेल्स शेयर कर देते हैं इतनी आसानी से कहीं भी, तो अपने डिटेल्स को शेयर करने के पहले 10 बार सोचें। क्योंकि हमने ये देखा कि कोविड काल के पहले से भी जब डीमोनेटाइजेशन आया, तो उसने भी डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करने के बाद तब से मुहिम सी चल गई, पर डिजिटलाइजेशन की तरफ हम बढ़ तो लिए, और हम वो कार्य कर रहे हैं कि हम ऑनलाइन पेमेंट्स कर रहे हैं। खासतौर पे शॉपिंग आप देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ा, खासतौर पे जब कोविड आया। तो कोविड बहुत महीनों तक जो है हम एक फिजिकल कांटेक्ट जो है वो अवॉइड कर रहे थे, तो इस वजह से ऑनलाइन शॉपिंग हम कर रहे थे। पर जब उसमें आप पेमेंट करते हैं तो जो अपने सारे डिटेल्स डालते हैं, और क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट में ज्यादातर आप कैश भी टच ना करना पड़े, इस तरीके के भी पेमेंट्स के नॉर्मली भी आपको इजी भी रहता है, चाहे गूगल पे से, चाहे पेटीएम से, चाहे फोन पे से, चाहे भीम ऐप से। गवर्नमेंट ने अपना ऐप ही बना दिया कि उसके माध्यम से करें, पर वैसे तो ये सब सिक्योर्ड ऑलरेडी होते हैं, पर यहाँ तक कि डेवलप्ड कंट्रीज में भी बहुत ही सिक्योर्ड सिस्टम होने के बावजूद हैक कर लिए जाते हैं। जैसे हमारे पहले के 2 स्पीकर्स ने कुछ एग्जांपल्स देते हुए बताया कितने बड़े अटैक्स हो गए थे, तो वो यूएसए, चाइना जैसी जो वेल इक्विप्ड कंट्रीज हैं वहां पर भी हुए। तो जबकि इंडिया है, जापान है, ये सब हम बढ़ रहे हैं साइबर सिक्योरिटी
की तरफ और हम उसको और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। पर हमारी जो जनता है उतनी लिटरेट वैसे भी नहीं है, और खासतौर पे अगर हम कहें कि जो आपका डिजिटल लिटरेसी है उसमें वो बहुत पीछे हैं, और हम लोग जैसे लोग भी उसके शिकार हो सकते हैं। मैंने कहा कि चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज हो, चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज हो, चाहे वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हो, चाहे कोई बहुत बड़ा विद्वान हो, बहुत साइबर एक्सपर्ट हो, और जो इलिटरेट लोग हैं वो भी वल्नरेबल सभी हैं। बस ये है कि जिसको बहुत कम ज्ञान है वो ज्यादा वल्नरेबल है, यानी कि डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी डिफर कर रही है, पर सभी वल्नरेबल हैं। और हमको इस चीज का ध्यान रखते हुए आगे के काम करने, उसमें खासतौर पे छात्राओं के लिए मैं कहना चाहूंगी कि समय समय पर अपने पासवर्ड्स वगैरह को चेंज करते रहें। और क्योंकि अब सर जैसा कह रहे थे कि हम कोई लेक्चर्स लेते हैं या कुछ है तो हम लोग फेसबुक पे शेयर करते हैं, तो वो सब आज जरूरत बन गई है। जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सभी अपना सोशल मीडिया अकाउंट है सबका चल रहा है, बस हमें कार्य करना है उस दिशा में, हम उससे पीछे नहीं भागेंगे, पर उसको किस तरीके से सिक्योर्ड रखा जा सकता है ये देखना है। अब अगर हम एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो हमारे जब ऑनलाइन एडमिशंस हो रहे हैं, ऑनलाइन एग्जाम्स भी हुए बीच में, फिर इस तरीके से सारी एक्टिविटीज ज्यादातर ऑनलाइन हो रही है। तो ऑफलाइन में लोगों को कैंपस में आना जरूर पड़ता था, पर बहुत लोगों को ऑफलाइन इजी लगता है, ऑनलाइन डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि उसके लिए उनको साइबर कैफे में जाना पड़ता है जहां पर छात्राएं अपनी डिटेल्स वहां पर शेयर करती हैं। तो वो उनको क्यों जाना पड़ा है? क्योंकि वो लिटरेसी नहीं है, उनको डिजिटल लिटरेसी उनको नहीं है। तो मैं सभी छात्राओं से भी आग्रह करूंगी कि आप तो नए जनरेशन के हैं, आपको डिजिटली लिटरेट होना पड़ेगा। आप कंप्यूटर के इतने सारे कोर्सेज हैं, ज्यादातर महाविद्यालय में भी कोर्सेज उपलब्ध हैं, पर बाकी बाहर से भी लोग करते हैं, पर महाविद्यालयों में भी ये कोर्स लगता है कि बेसिक ज्ञान तो आपको होना चाहिए। तो इसी के साथ मैं आप सभी का ज्यादा समय ना लेते हुए आयोजकों को मैं शुभकामनाएं देती हूँ, और जो भी हमारे आज के गेस्ट स्पीकर्स थे उन सबका मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और हमारी छात्राओं को, हमारी शिक्षिकाओं को अपने ज्ञान से हमें अभिभूत किया। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। धन्यवाद मैम। आपकी सजगता व सहजता हमेशा हमें मिलती रहे और अनवरत हम ऐसे ही कार्यक्रम करते रहे। अब हम वेबिनार की कन्वीनर डॉक्टर सरिता कनौजिया को बुलाना चाहती हूँ, आमंत्रित करती हूँ आए और हम सबकी तरफ से अपना आभार व्यक्त करें। सरिता कनौजिया मैम। थैंक यू मंजुला दी। एम आई ऑडिबल? ओके। इस आभासी मंच पर आसीन सभी प्रतिष्ठित गणमान्यों को मेरा आदरपूर्वक नमस्कार। अब हमारा वेबिनार सार्थक समापन की ओर अग्रसर है और मुझे इस बात का गर्व है और प्रसन्नता है कि हमारी एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एंड इको रेस्टोरेशन सेल की पूरी टीम की ओर से मुझे आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। पिछले 1 घंटे से अधिक समय से हम लोग ज्ञान धारक के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। निश्चित रूप से विषय रुचिकर एवं वर्तमान आवश्यकता के अनुरूप था, जिसमें हमारे प्रतिष्ठित एवं प्रभावपूर्ण वक्ताओं डॉक्टर प्रबल प्रताप जी, डॉक्टर रजनीकांत वर्मा जी, डॉक्टर मनोज पांडे जी के प्रभावपूर्ण भाषण ने हमें साइबर अपराधों के प्रति सजग किया और इनके समाधानों के प्रति हमें जागरूक किया। आप सभी वक्ताओं की उपस्थिति रेगिस्तान में जल के समान रही। आपके ज्ञान सरोवर ने हमारे श्रोताओं की ज्ञान पिपासा को अवश्य ही शांत किया होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं अपनी टीम एवं नवयुक्त परिवार की तरफ से हृदय से आप सभी प्रतिष्ठित वक्ताओं का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। अब मैं हमारी वेबिनार की चेयरपर्सन, हमारी ऊर्जावान प्राचार्य प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय जी का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने इस विषय पर वेबिनार के सार का पूर्णता से उस पर प्रकाश डाला तथा जिनके प्रोत्साहन, मार्गदर्शन, पूर्ण सहयोग एवं गरिमामय उपस्थिति से यह कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हुआ।
मैं उपस्थित सभी प्रतिभागियों, शिक्षक शिक्षिकाओं एवं छात्र छात्राओं का आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके धैर्य एवं उत्साह ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। आगे मैं हमारी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मंजुला यादव का आभार व्यक्त करना चाहूंगी, जिनके सफल संचालन से यह वेबिनार क्रमबद्ध रहा। मैं इसी क्रम में आगे इस कार्यक्रम की को कन्वीनर डॉक्टर चंदन मौर्य एवं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर सरोज रानी एवं डॉक्टर सुनीता सिंह का आभार एवं स्नेह देना चाहूंगी, जिनके उत्साह, सजगता, कर्मठता ने इस कार्यक्रम को हर तरह का सहयोग देते हुए साधा है। मैं डॉक्टर नीतू सिंह का धन्यवाद देना चाहूंगी, जिनके टेक्निकल सपोर्ट के अभाव में जूम पर यह मीटिंग संभव होना कठिन हो जाता। एक बार पुनः मैं आप सभी का धन्यवाद करते हुए इस वेबिनार के समापन की घोषणा करती हूँ। सजग रहिए, सतर्क रहिए, सभी अपने जीवन में खुशहाल रहिए। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम